Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine. Students, today we will discuss about article the. Beta, in the earlier video, we have already discussed about articles A and N. But before that, we will just recall article A and N. A and N is used to denote a singular noun. Article A is used with consonant and article N is used with vowels. Now come to the article the. The is used with singular as well as plural nouns. Article the is used when we talk about same noun the second time. That is about a particular thing. Let's see an example. That is a stall. There is an umbrella on the stall. बेटे जब हम एक नाउन के बारे में बात करते हैं फिर दोबारा सेकेंड टाइम उसी नाउन के बारे में बात करें तब भी द यूज़ होता है. ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में देखो. दैट इज़ अ स्टॉल. अब स्टॉल है, इट स्टार्ट्स विद एस, it is consonant, so we will use here a. There is an umbrella. Umbrella starts with u, which is vowel, so we will write here an. On the stall. Now again we have talked about this stall, so we have talked second time about stall, so it becomes particular stall. Now we will write here the. Fine. Now let's see some examples. See beta, there are two bicycles, so we will write here the. There are two erasers, so we will write here the. There are two ostriches, so we will write here the. We use the with plural noun as well as singular noun. Now beta, come to the book at page number 28. Let's read more about the article the. Beta, the is used before the names of oceans and seas. For example, the Indian Ocean and the Red Sea. जो the है वो oceans और seas के साथ भी यूज़ होता है. ठीक है, रिवर्स के साथ भी लगता है बेटा. द गंगा, द नाइल. फेमस बिल्डिंग्स होगी, मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे द वाइट हाउस, द रेड फोर्ट, इनके साथ भी द यूज़ होता है. थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, जैसे अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गए, स्काई होगी, इनके साथ भी क्या यूज़ होता है? द. नाउ कम टू द डी पार्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द. Come to the first part. I had apple for breakfast. Now apple is single, so we will use here a or an. Now this starts with the letter a. A is vowel, so we will write here an. Now next we are going to see Taj Mahal. Taj Mahal is famous building. It's a monument, so we will write here the. I saw black swan. Black, it starts with B. Now B is consonant, so we will write here A. Dash swan was beautiful. Now second time beta we are discussing about swan. अब हमने second time फिर swan के बारे में बात की है. This becomes particular, so we will write here the. Fourth, we are waiting for school bus. अब स्कूल बस जो है बेटे वो उसमें आप रूटीन में जाते हो, तो वो एक पर्टिकुलर स्कूल बस है आपके लिए. तो पर्टिकुलर स्कूल बस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? द. स्काई इज़ ब्लू. अभी मैंने बताया था अर्थ, सन, मून, स्टार, स्काई सबके साथ क्या यूज़ होता है? द. वी नीड अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स. अम्ब्रेला स्टार्ट्स विद यू. यू इज़ वॉवल, सो वी विल राइट हियर एन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज.
He is kind man. It starts with K, which is consonant, so we will write here A. This is tall building. It starts with T, which is consonant, so we will write here A. We play in park near our house. अब ये जो पार्क है ये आपके घर के पास है, आप यहीं पर खेलने जाते हो, सो ये एक पर्टिकुलर पार्क बन गया आपके लिए. सो वी विल राइट हियर द. I saw elephant today. Elephant starts with E, which is vowel, so we will write here an. Delhi is big city. Big starts with B, so we will write here A. My mother bought me new bicycle. New starts with N, which is consonant, so we will write here A. We went to see Qutub Minar yesterday. Qutub Minar is famous monument, so we will write here the. Earth is round. Again we will use the with earth. Now E part is your homework, beta. I hope the concept of articles is clear to you now. Now you will complete your book